امیجن وہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوگا. تو اٹ مینس کہ ہم سب نے ایکٹ کرنا ہے, نیشنل لیول پہ ایکٹ کرنا ہے, اس کو ایک ایمرجنسی سمجھ کے کام کرنا ہے, اور not very proud of it, but at least actually embarrassed about it, کہ ہمارے اپنے صوبے میں 70 لاکھ کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان نمبر سے تھوڑا ڈفر کرتا ہے, بٹ واٹ ایور 70 نہیں ہے, اس سے تھوڑا کم ہے. ون از ایون ون ٹو مینی. ہم نے دیکھا ٹریڈیشنل طریقہ جو ہمارا ہے اس سے ہم یہ مسئلہ سالو نہیں کر سک رہے. ہمارے لیے اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہو رہا ہے پورے ملک پہ, پاورٹی ہماری بڑھ رہی ہے, بزنسز کی ریونیوز پروفٹیبلٹی وہ ختم ہو رہی ہے, ہماری گورنمنٹ کی جو بھی اسٹیپس ہیں ان کا امپیکٹ بالکل نہیں ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے باقی ملکوں کی طرف دیکھیں, انفارچونیٹلی پاکستان اس وقت 4 میں سے چوتھے نمبر پہ ہے, چاہے وہ آپ کی جی ڈی پی پر کیپٹا ہو, چاہے لٹریسی ہو, چاہے لائف ایکسپیکٹنسی ہو. دس از ناٹ سم تھنگ ویری ٹاک اباؤٹ. اور یہ ہم اتنے برے نہیں تھے. وی آل آر رسپانسبل فار دس بیکاز ہم لوگ اس پہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکے. آج سے 2 سال پہلے, تقریباً 2 سال ہو گئے, آئی بلیو اے لٹل اوور 2 years, ہم اس چیز کو ہم زیادہ سکولز کر رہے تھے, ہم ٹیچرز کو امپلائی کر رہے تھے, ہم نے کافی کام کیا. ہمیں ایک آرگنائزیشن ہے ٹیچ دا ورلڈ, انہوں نے اپروچ کیا, اور آئی ایم شیور اب بعد میں ہم بتائیں گے بھی کہ اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایٹ اے مچ اسمالر کاسٹ, خاص طور پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, جو بچہ 4 یا 5 سال کا ہوتا ہے اس کو اسکول جانا چاہیے, جو 5 سال 6 سال 7 سال بعد اگر وہ اسکول کبھی نہیں گیا اور اس کو آپ گریڈ 1 میں یا کنڈر گارڈن میں ڈالیں گے, نمبر 1 he'll be out of place, اس کے پرابلمز ہوں گے. تو وہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے یہی چیز دوسری جگہ پہ بھی افریقن کانٹیننٹ میں اس پہ کام کیا تھا. تو ہم ان کے ساتھ مل کے ہم نے مائکرو اسکولس ڈیجیٹلی انیبلڈ, and I've visited these schools myself, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. بلکہ میں نے خود تو ہم چلیں جب جاتے ہیں تو پلان بنا کے جاتے ہیں, بٹ میں بغیر پلان بنا کے بھی گیا تھا وداؤٹ ٹیلنگ ہم ویئر آئی ایم گوئنگ. اور اس کے بعد دوسروں سے بھی رورل ایریا سے مجھے فیڈ بیک آیا کہ جی ہمارے یہاں بھی یہ اسکول کھول کے دیں. اٹس اے ویری سمپل کانسیپٹ. ایک کمرہ ہے, 25 بچے اس میں ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں, ان 25 بچوں کو ٹیبلٹس دیے ہیں جس میں وہ سلیبس موجود ہوتا ہے, اور وہ ایکسیلریٹڈ لرننگ کی طرف ہو جاتے ہیں. دی آؤٹ کم ہیز بین ویری گڈ. اور ہم جس طریقے سے, اب نمبرز ایگزیکٹلی دیں گے, میں بھول جاتا ہوں, شفیق صاحب یا جو بھی پریزنٹ کرے گا وہ بتائے گا, ہم نے اپنے ٹارگٹ سے تیز. اور اس میں ہم نے کام یہ کیا تھا, جب میں بات کر رہا تھا, ہماری پچھلی ٹرم تقریباً ختم ہونے والی تھی, تو اسے دل بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اور پتہ نہیں اس میں کیا ہو, لیکن ہم نے اس پروگرام کو سارٹ آف ایسے رنگ فینس کر لیا تھا سارا کہ کوئی بھی اس کو چھیڑ نہ سکے. اینڈ اللہ تعالیٰ کی دعا سے people of this province voted the Pakistan People's Party back into government, and they again chose me to lead. جب میں واپس آئے ملاقات کی تو it was running as planned, اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب اس کا ایک phase 2 بھی شروع کر رہے ہیں. we'll have to really work out, اور آپ سب اس کمرے میں ہیں اور آپ سب کا ایجوکیشن سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رہا ہے, اپنے CSR میں کام کرتے ہیں یا ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں وتھ ایجوکیشن. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اگلے 3 سے 5 سال میں, دس ٹرم انشاءاللہ ناٹ 5 بٹ مور ٹورڈز 3 years, 30 لاکھ بچے ہم جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو لے جائیں. اگین اس کے بعد بھی
इतने ही रह जाएंगे जितने हम करते हैं, बल्कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो शायद और ज़्यादा रह जाए। बट एटलीस्ट ये हम टारगेट करें इन माइक्रो स्कूल्स के तहत, हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं उनके तहत। और इस सिलसिले में आज जो ये इवेंट है, दो चीज़ों के लिए, एक तो ये प्रॉब्लम जो है जिसका सबको पता है उसको हाईलाइट करना, इसकी जो हमने जिस तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की है उस पे, और जो सक्सेस हुई है इसकी फ़ेज़ 1 की, उस सक्सेस को सेलिब्रेट करना, और उसके साथ साथ अगली फ़ेज़ के लिए विथ मोर विगर उसको फॉलो अप करना, ताकि हम अपना टारगेट जो है इसका पूरा कर सकें। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो इस कमरे में इस वक्त मौजूद हैं, कि आप इस इवेंट में आपने टाइम निकाला और आए, और इंशाल्लाह ताला together and with lots others, even the people in this room will not be enough. We'll need a lot of help from a lot of people in order to achieve this, and I'm grateful because this is primarily, बल्कि अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं तो, कोई मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकता है और करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को 25A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी इट्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रिमेन आर एजुकेटेड। लेकिन प्रॉब्लम को देखते हुए हमें दूसरों की भी मदद की ज़रूरत है, और सिलसिले में आई एम ग्रेटफुल कि आप सब इस कर्म में आए। थैंक यू वेरी मच जी।
The biggest source of power in any country now, in the modern world, is the business community. In a developed country, 95% of people work in business. So it's very important for business to have educated workforce. And Alhamdulillah, we are moving towards it. We have tremendous talent at the elite level. We do not have talent demographically distributed beyond the elite. And our elite is maybe 5% of the country. So Alhamdulillah, with what we're doing here, and people that we have here, forces that we have here, inshallah, we'll be able to make this happen. Corporate Pakistan is absolutely key. Media is also key because the mindsets in the country, the recognition of the problem, are very greatly influenced by media. And inshallah, that will be happening. We have great educationists here. One is sitting by my side, and with all three of us working together, we will inshallah be able to make a major advance here. And at this point, all I want to say is everybody knows what the problem is. It's too big a problem for any one entity to solve. So if we all get together and do it, inshallah, Sindh will be a model for the rest of the country. And what we're doing is a gift from Sindh to the rest of the country, frankly, even to the world. Humanity is beyond our own country. So, thank you very much, Paul, for being here. We are honored to have your presence and your support. Alhamdulillah. We are a very special collection of people around this table in this room today. I'm too small to mention each of you individually, but I would certainly like to mention that we have from the government, the Ministry of Education, the Secretary of Education, from academia, we have Travis here, we have AKU here, from media, we have Dawn here, we have Hum here, we have Young here, from advertising, we have Roman Rose here, and there are plenty of other people around the table. Excuse me if I do not mention each of you, but you are here specifically chosen to contribute. And if you see our posters around the room, we are moving a step ahead by asking you to say the words, "I pledge support to the Chief Minister Sindh's initiative for no out-of-school children in Sindh, inshallah." Before we move to the next section, where I will invite some of you to please share your comments, your commitments and your thoughts, we have a small clip that we will run and we will show you. Just before we do this, this is an actual verbatim, non-scripted comment from the father of a teacher, of a student, a girl student, who started going to our school in the interior of Sindh. His name is Ibrahim, and I'm sure you will be inspired with this unscripted thoughts of his on what TTWF and digital literacy is doing for his child. And SAF. मेरा नाम अब्दुल करीम है, इलाके का नाम निशारी रोड है। हम 7 साल से हैं। हमें तो तालीम भी मिली, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए। हम तो 3 जमात पढ़ी हैं और आगे पढ़ाई करें। तो हमको ये खुशी है इस इलाके की, जो भी हमारा भी एक स्कूल है, बच्ची का नाम सुनीता है और 1 साल से ये पढ़ रही है। तो पहले ऐसा मसला होता तो उसके 2 साल या 3 साल सही दी जाती। उनको सुबह पहुँचाते हैं और शाम को लेके जाते हैं। अनपढ़ में और पढ़े हुए में बहुत फर्क है भाई। और बच्चों को लेके आना, पढ़ाना या उनके माँ बाप के पास जाना, उनको बताना। जो बच्चे नहीं आते तो फिर खुद वो आके मेहरबानी करके वो बच्चों को लेके आती है। इस किस्म की पढ़ाई देखी, यहाँ पे तो सब कुछ हो रहा है। तो हम उसको खेल की तरफ ले जाते तो वो कहते हैं नहीं हमने ये पढ़ाई करनी है और सुबह उनको पढ़ के सुनाना है। औरत को या
दो, लेकिन औरत की बात जो पढ़ाती है वो अपने ख्याल से पढ़ाती है। और माशाल्लाह वो जो बच्चे आते हैं जो शाम को हवाला देते हैं तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमें भी सीखने को कुछ मिलता है जो भी ये बच्चे ये अब ये बोल रहे हैं अंग्रेजी में। पहले तो डॉक्टर से सुनते थे जो ये टैबलेट है, लेकिन अब बच्चे आके बताते हैं ये टैबलेट है तो हमको बहुत खुशी होती है। हमने तो कभी सोचा नहीं था ये जो तालीम हमारे दरवाजे तक पहुँच गई है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे बच्चे को तालीम दे। Sindh, there is the Sindh Education Foundation, and there is the Sindh Murad Foundation. So this is a genuine partnership, and this is one of the reasons that what we are doing, the deployment of the field, has actually worked on time, in full, up till the first point, and now inshallah we can do the next. I will now request some of the participants to share their comments and commitments and views that they have been in the field on what they have seen and what they would like to see happening as we move into the second scale. Firstly, I would request Honorable Minister of Education, Shah, who visited our model micro school at the Sindh Literature Festival this past weekend and interacted with our kids. I would very much welcome your comments on the Sindh Murad Foundation's project. Thank you very much. Thank you, Honorable Mr. Shah, and all the participants. यकीनन ये जब सीएम साहब ने ये मुद्दा डिस्कस किया लास्ट ईयर कि शफी खान साहब एक टीच द वर्ल्ड थ्रू एक लाए हैं मॉडल और जिसके थ्रू हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को थ्रू डिजिटल लर्निंग उनको एंगेज करें। एंड देन 30 मंथ्स में हम कवर करवाने के लिए वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें 500 सेंटर्स हम ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके थे। 1500 सेंटर्स अभी उसकी बिल्डिंग हो चुकी है और थ्रू CBOs कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम दे रहे हैं, जिसमें कोई अराउंड 60,000 स्टूडेंट्स को इनिशियली 60 to 70,000 स्टूडेंट्स को हम इस साल कैटर करेंगे जो आउट ऑफ स्कूल है 9 years and above एज जो फॉर्मल स्ट्रीम में नहीं जा पाए। मगर जब ये आया वाकई क्योंकि डेफिनेटली आजकल ये डिजिटल एज है तो उसमें हमें डिजिटल सॉल्यूशंस पे जाना पड़ेगा। तो अब ALP एंड ADLP दो हमारे पास नॉन फॉर्मल सेक्टर में प्रोग्राम मौजूद है। हमारे एक्शन प्लान भी हमने पूरा कराया है जिसमें यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, जितनी भी इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके साथ मिलकर हमने एक रोबस्ट एक्शन कॉस्ट एंड एक्शन प्लान बनाया है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को कैटर करेगा, जिसकी हम एक लॉन्चिंग जो है वो वेरी सून प्रोबेबली जनवरी में करने जा रहे हैं, जिसमें सारे डोनर पार्टनर और आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट गेस्ट हैं सबको भी हम उसमें मदद करेंगे। अब जहाँ पे ये प्रोग्राम मैं तो समझता हूँ कि जब मैंने सीएम साहब ने सुबह मुझे फ़ोन किया, मुझे पता ही नहीं था किस लिए मुझे बुला रहे हैं सुबह 7:30 बजे कॉल आई कि मैं घर को मैं पहुँचा तो सीएम साहब ऑलरेडी रेडी और वो बाहर खड़े हुए थे तो मैं देर कर दी और शफीक साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शफीक साहब को पता नहीं था हम जा पा रहे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद कहा कि हम एक सेंटर विजिट करने जा रहे हैं, आपका यहाँ नियर बाय सेंटर कहाँ पे है। तो हम फिर चले गए कोरंगी में और स्लम्स में एक एरिया में जहाँ पे स्कूल पे जाके पहुंचे, वहाँ पे वो कम्युनिटी के लोग भी आए और देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गेम बेस्ड लर्निंग है, दुनिया में अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे चले गए हैं। हम तो अभी तक भी बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, मगर वो साइबर सिक्योरिटी में वो करना चाहता है अपना यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली ये फोकस किस्म का
इन्वॉल्व है तो इसमें इसकी कॉस्ट वन टाइम इसकी डेफिनेटली आती है। मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को हमें एक्सपेंड करना है। इस वक्त हमारी जो इसमें उर्दू और इंग्लिश को हमने इंकॉर्पोरेट किया है, मगर इसमें सिंधी को भी शामिल करना पड़ेगा। जो मैंने ऑलरेडी शरीफ साहब के साथ हम लास्ट तक बैठे थे तो हमने उसमें मीटिंग में रखा कि लैंग्वेज अथॉरिटी के साथ बैठ के हम उसमें सिंधी का भी लैंग्वेज को हम एड करें, क्योंकि फाउंडेशनल लर्निंग में बहुत से हमारे सिंध के हम जब इसको एक्सपैंड करके जब जाएंगे रूरल एरियाज में तो वहाँ पे हमें जो है सिंधी को शामिल करना पड़ेगा। मजबूत तौर पर मैं समझता हूँ उसको हमें मजीद एक्सपेंड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो लास्ट फ्लड्स में डैमेज हुआ उसके ऊपर हम उसको रिबिल्ड कर रहे हैं, बिल्डिंग बैक बेटर कोशिश हमारी साल आए। कोई 5,000 स्कूल नेक्स्ट ईयर तक हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 20,000 स्कूल डैमेज हुए थे, जिसने जो भी एक फैक्टर है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से, क्योंकि आपकी जब टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 50% कोलैप्स हो जाए तो डेफिनेटली बच्चे आपके कहाँ रहेंगे। उसके बाद आपकी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, आपका अनगिवन बर्थ रेट है, इसका इतना प्रेशर है कि हम उसको एंडलीना हमारी हॉस्पिटल्स का स्कूल आगे चल के ये उसको कैटर नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा एडीएल की माइक्रो स्कूल्स जो है कैंपस, इसमें सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। सोली गवर्नमेंट जो है वो कितना वो दिखा सकती है मुझे नहीं पता। मैं नहीं समझता कि सेबल हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर चिकन करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करे, मगर ये बहुत बड़ा एक हरकुलियन टास्क है जिसको हम गवर्नमेंट नहीं कर सकते। सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें चिकन करनी पड़ेगी और इसमें CSR को जो है वो इसमें एड करना पड़ेगा। एक बच्चा देखें, हमारी NFE में 1500 एक बच्चा पढ़ सकता है और यहाँ पे 2700 में 3300 इनिशियल कास्ट है, मगर 2700 आगे चल के 2700 उसकी बने तो एक बच्चा पढ़ सकता है। अगर 10 बच्चे ही कोई उठा ले, चलो मैं 10 बच्चे के शफी खान साहब को पैसे दे देता हूँ, तो 10 बच्चों को पढ़ा लो, रिफ्रेश कर लो, तो मैं समझता हूँ इतने सारे माशरे में हम जो साहिब इख्तियार और जो लोग बैठे हुए हैं साहिब हैसियत, हम 5-5, 10-10 बच्चों का भी बोझ उठा लें तो मैं समझता हूँ कि हम ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को इजीली कर सकते हैं और दुनिया को भी दिखा सकते हैं कि सोसाइटी ओन्स इट, तब वो नहीं देखो। तो मेरा ये इस पे कमेंट है और मैं बात देता हूँ शफीक साहब को, सीएम साहब को भी परफेक्ट थैंक यू कि उन्हें हमेशा वेलकमिंग रहे हैं पूरे टीम में। मैं फकत अपनी कमिटमेंट शो कर सकता हूँ कि जो भी इसमें वैल्यू एडिशन होगी टू सपोर्ट एंड टू एनहांस आवर एजुकेशन एंड टू एनरोल आवर किड्स, मैं डेफिनेटली काम करूँगा। दिस इज माय This is a multi-sectoral gathering, and as Chief Minister and Sardar Sahab said, this crisis cannot be addressed by one part of society by itself. It is time for us to then talk about what we can do to take this mission forward, this movement forward. So I would request I would then request academia has a role to play in this, media has a role to play in this, corporate social responsibility has a role to play in this. So I would request first Mr. Nabil, who you all know has been a federal minister and has worked with the great Ministry Bhutto directly on multiple times, as well as currently is the president of ZAPIS. I would like her to share firstly, her personal visit to the Railway Colony Digital Micro School of Peace Over Foundation and how she feels about scaling up. I have one small request. If you can keep your comments to 3 minutes so that we can include as many people as possible. Thank you very much, Chief Minister Sir, for this opportunity to be here. And thank you, Shafik Sir and Farhan Sir, for the teaching of the In all the years that I spent in education, बड़ा तवील अरसा मेरा गुजर चुका है, तकरीबन 45 साल हो चुके हैं। हर लेवल पर मैंने कैबिनेट के निज़ाम को देखा है। तो कई दफ़ा सॉल्यूशंस बताई जाती हैं और रखी जाती हैं इस पर कि ये हल है हमारा। मैं
लिटरेसी सेंटर्स किए, नॉन फॉर्मल किए। लेकिन मेरे ख्याल में आज जो हमारे सामने मॉडल है, जो मैंने खुद जाके देखा है, उसको फिर मैंने पूरा उसका मुताला किया है, from every perspective. It is harnessing education technology. If we want to go to scale, this is the only way to do it. The lessons are prepared on the basis of the Pakistan curriculum. When I walked into the school, एक कमरे का स्कूल था और वो कमरा था जो कि गवर्नमेंट स्कूल का एक हिस्सा था। और उस कमरे के अंदर जाते ही मुझे लगा कि ये बिल्कुल I was simply blown away. I said that to बच्चे बैठे हुए थे, वो मुकम्मल तौर पर अपने लेसन्स में हेडफोन लगा था, टैबलेट सामने थी, the tablet is the teacher, the headphone gives the child everything, response, gamification, Pakistan curriculum, math, English and Urdu. और वो इतने तवज्जो से अपने उसमें मशरूफ थे, and learning was actively going on. So no time was wasted at all. So this model that I saw over there is from the learning, that's the first thing, कि learning और academic point of view से क्या ये model सही है कि नहीं। मुझे ये लगता है ये बहुत सही है, बहुत मुनासिब है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें further refinements आ सकती हैं, इसमें से ज़रूर improve की जाएगी, इसमें आगे चल के इसके levels बनेंगे, level 1, 2, 3, 4, ताकि हर लेवल का जो बच्चा आता है, हर एज का जो बच्चा आता है, वो उसमें शामिल हो सकता है। और ये प्रैक्टिकल है, सेफ सराउंडिंग्स थी, और इन्होंने जो आईटी में वहाँ कमरे में एक कैमरा लगा हुआ था, इनके मेन ऑफिस में एक डैशबोर्ड है, वहाँ पे हर बच्चे की जो लर्निंग है, आउटकम्स है, असेसमेंट है, वो एकदम वहाँ पे वाज़ेह हो जाती है। सो देयर इज नो टाइम लॉस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी सर इज द आंसर टू इट। And I think TTW in partnership with the Education Foundation has provided a lot of support. I really think it is doable. Now, what are the challenges? This one room school is situated कराची में, तो क्योंकि गंभीर आबादी है, तो वहाँ पे गली मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो सोशल एनालिसिस बड़ी जल्दी से इकट्ठा करके ला सकते हैं, और वो वॉकिंग डिस्टेंस में एक्सेस टू स्कूल, फिजिकल एक्सेस टू स्कूल इज क्रिटिकल। जरा से दूर दराज इलाकों के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशंस है। दूसरी बात ये है कि ये बच्चे सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए आते हैं, 4 शिफ्ट में बैठते हैं, सो टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें साथ बच्चों को कुछ लाइफ स्किल्स बनाने बताए जाते हैं, कुछ पेरेंट्स की रसाई वहाँ पर बहुत आसान है। माएँ अपने घर से निकल कर आ सकती हैं क्लासरूम में बच्चों को लेने या छोड़ने। सो एक्सेस इश्यूज, content of the learning content, assessment of what the child is learning, and the safe environment. I really feel कि इसको multiply कर सकते हैं, किया जा सकता है। 2-3 challenges इसमें हैं, उसकी मैं निशानदेही कर देती हूँ। Challenges यकीनन ये होंगे कि जब आप scale पे जाते हैं, तो every situation and every area is different. अगर आपने कोटकी में जाके आउटर स्कूल को इकट्ठा करना है, so how will that be addressed? But the challenges can be addressed. I, sir, am very much supportive of it. I endorse it. I think the business partnership around this can be built. I think the private sector partnership around it can be built, not only government schools, but private sector schools. So we can scale on it. Thank you. But we need the support of CSR and the business community that is represented here in quite big strength. I will request Nazim Haji Sahab to please share some comments and his view of what he has seen here in several of our schools, and he's also been talking to his peers in business and in the trade and association industries. So Nazim Sahab, if you can please share your thoughts. Thank you, Farhan. Chancellor, ladies and gentlemen, I've been involved in education for quite some time, privately, basic foundation, and also public sector, public-private partnership, trust. Sorry. I just want to share my experience. I
conventional schools. So it has to be technology, information communication technology. We've had the Khan Academy many years ago, then we had some software and specialist subjects like physics, chemistry, and all that. We put that across schools. It does, because that actually improves the quality of the learning process. The teachers also start. Having said that, when we came to TWF, Teach the World Foundation, I met Shafiq Khan Sahab last Ramzan. And of course I appreciated what his talk was, but I said, Shafiq Sahab, I'm not prepared to do anything. So I said to Shafiq Sahab, he also said the same thing. Believe me, all of you have to go and see this. This presentation or my talk will not convince you. Once you visit that school and see those children, how bright they are, and how they are as good as our children. I mean, it's just that opportunity they are not getting. This micro school, which I don't want to repeat everything what you said, that the advantage of a community school gets us. There is no gender discrimination. There is no age discrimination. The child comes in independent. At the age of 7, 8 or whatever, 12, 13, 14, and there is no teacher required. A supervisor is there. So that this is something of a game changer. Believe me, this is what I feel. That the ground level foundation can be created in Pakistan. Now the next question is, वो बच्चे PTET WIG 2 साल का accelerated करके फिर कहाँ जाएंगे? Now that's another question we have to address. So that is a separate matter altogether. That can be reformed government schools, they have to be scaled up, etc., etc. But at least the foundation is being laid. So basic primary literacy based on software, technology, and believe me, I'm in love with this book. And I've been like talking about any person that I meet, I talk about TPW. In fact, Shah Sahab is here, Daki, the patron of Gurukh Associate Training Industry. I thought of it that because they're dealing with certain areas where labor comes from that area, so all the town associations should get on board and take responsibility that I've taken away from this table, that no child in the next 5 years in the Gurukh industrial area will be out. And more importantly, the cost is minimal. It's an amazing project. Of course, it will require improvement as we go along. Like after the back, you mentioned something like, you mentioned there are hiccups in that, especially in the rural areas where the farmers areas. There's an issue there, but we can also address and face that problem. So my final request and appeal, and like I must also appreciate the public-private partnership concept of the Sindh government. It's internationally recognized as a very good model of success. In fact, I'm going through it in Zindagi Trust. We've been there for the last 50 years, I think, and taking over government schools and the elementary college of education. So we should sort of go out helping hand. The Sindh government, the SDL, DPWF, and the corporate sector. I think, the corporate sector, that's shy of paying taxes. Yes. Let's not talk about raising taxes. Let's talk about raising your CSR budgets and contribute towards education. Believe me, I feel that, I just have now for the remaining part of my life, I want to focus on education. Thank you. Thank you. We have heard from the government, we've heard from academia, we've heard from business. May I now request CEO of TV, Rishi, please share his thoughts. Assalamu alaikum. Thank you very much for this opportunity. I'm so impressed, by the commitment of Shah when we set up the SKF, and all the initiatives this government is taking.
I think one of the best models that we see coming out, and I have great hope that no child will be left uneducated or uneducated, at least, because the initiatives are moving forward. What I would like to say is about Humpty a little bit. We are a public interest company. We donated approximately, last year we donated approximately close to 5% of our net profits. We are working with some schools, SCF also. However, I do feel that corporate sector requires more initiative and maybe take out at least 1% of their net profits. Just imagine Sindh with such a vibrant business community, it donates just 1% of the profit. And maybe Sindh government can encourage them that the 1% that they donate, they can get some kind of credit in terms of their own taxation or whatever. But that money is going to philanthropy. That money is going towards education. And I think today, with the scarcity of funds with the government, and the low percentage of GDP going to the education or social sectors, maybe the private sector can contribute, the corporate sector can contribute at least that amount to these initiatives, not just the initiative that we're seeing today. It's a great initiative. We all talked about it, Teach the World Foundation program, but all other education initiatives, if Sindh government encourages and makes a formal commitment from all corporate sector to donate 1% of the net profits, I think that could be a game changer. And once the funds are there, definitely all initiatives, the people who are working on this field can make a contribution. I make from my own organization a commitment of a minimum 2.5%, but we go as high as 5%. We continue doing that, and would love to work with the government or any other education institution. That comes from the corporate head that I'm looking. The media head that are heavy, and I will speak on behalf of my friends from BBA as well, that we will carry all great initiative news and coverages of such initiatives free of cost, any media that we can contribute towards this and make awareness towards this great initiative of the government. Thank you. Thank you. One last comment, because I'm very sensitive to the time requirement. He's somebody who we all know. He has given his life to advertising as well as to civil service. I will request Yamini Vasa to kindly share his thought. He also knows the EWF and has visited our schools. So, sir, please. Bismillah. Thank you very much. Compliments to the Honorable Chief Minister and to Dr. Khan Saab, who will Education Department SCF, and all those here. It's a privilege to be here. It was also a privilege for me to be introduced to this concept over 4 years ago by Mr. Shafi Khan, and it has fascinated me since then. I have 3 points to make. One, considering the scale of the problem, I think Teach the World Foundation and the government of Sindh should reach out to this large network of civil society organizations and community-based organizations in Sindh to be able to extend access, reach, and deliver this radical concept to the grassroots, and not be dependent only on SCF or on Teach the World's own network. And that would not in any way diminish the importance of SCF or TTWF. There is a large number of potential deliverers for this who should be tapped. Second, I am concerned about the human element. Eliminating the teacher on one hand is very good, but there can be no substitute for the human dimension. And therefore, simultaneous to this, I think we need to invest much more urgently in teacher capacity building and use this technology to create a new cadre of teachers that are not the conventional teachers
but use educational technology as an instrument to overcome the inherent limitations from which they emerge. Third and last point I want to make is, while technology is the solution staring us in the face, we need to be cautious about the impact that AI technology, the short, fast cut, what will it do to cognitive skills? We don't want to create automatons or robots with a human face. That is the peril of using technology. Now, that is not to say that we should not use tablets, but we cannot visualize a truly educated population, educated beyond numeracy and arithmetical skills, education in its most resonant and comprehensive sense, without impacting the human dimension, and cautiously using AI in order to prevent a diminishing of the cognitive capacity, because studies are already showing a very negative, debilitating impact on the capacity of children in their cognitive dimension. Thank you very much. I will take an extra minute. First of all, Ahmed Chinoy Saab is here representing Mr. Keeping G. He has requested a minute to comment on behalf of the PTA society. Thank you very much for giving me this opportunity. In fact, I represent Jalan Education Board, where we support 15,000 students of AI and the learning areas. And to those schools are one of the best schools of the area, because they always get top positions in the intermediate as well as the medical examination over there. I fully support this government-public private partnership, and I have always been a strong advocate for that. And on behalf of my General Education Board, whatever support we can give this this organization, we will be most happy to do that. Thank you. There are two further points of the agenda this morning. One is to celebrate the success of what was called the Sindh Education Foundation and East World Foundation's pilot phase of launching 125 schools. So we have a small little clip about this, and then the final. So that ribbon cutting pizza was in what year? 23? August 23, yeah. August 2023, so was the first school that Shah Saab inaugurated for us, and that's very on the right side, a picture that we're very proud of and that we use very often to show him seated with our kids, understanding, appreciating and testing them on their on the impact of digital education. मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं पश्चिम मोहल्ला का रहवासी हूँ और यहाँ पे मैं एज ए फील्ड ऑफिसर काम करता हूँ। लास्ट में हमारे को स्कूल स्टार्ट हुए कोई 2 साल हो चुके हैं। एक 1 रूम स्कूल है हमारा सेटअप। अब सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है बिजली ना होने के बराबर है। स्कूल शुरू करने से पहले हम एक सर्वे कंडक्ट करते हैं, जो कि घरों में जाते हैं हम लोग, फिर वहाँ पे सर्वे करते हैं, पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, क्वेश्चन होते हैं सर्वे सीटों में हमारे पास एक फॉर्म है, उसको फिल करते हुए सबमिट करते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, क्या वजह है। काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि डिजिटल है क्या। कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो कि रिफ्यूज़ करते हैं कि भाई हमने तो फॉर्मल पढ़ा है, हमने तो जो है किताब पे पढ़ा है, बुक्स पे पढ़ा है, तो हम कैसे समझेंगे यहाँ पे हमारा बच्चा कुछ सीखेगा। कुछ लोग ऐसे भी सोच के होते हैं कि हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजें, लेकिन हम उनके पास जाके और हमारी फैसिलिटेटर्स जो है वो फीमेल से खास तौर पर ये है कि हम उनको ये बताते हैं कि भाई आपके बच्चों को जो पढ़ाएगी जो टीचर है वो फीमेल है। अपना टैबलेट्स निकाल के दिखाते भी हैं कंटेंट कि भाई देखो हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं और इस चीज़ से बच्चा सीखता है। और मैं आपको कहूँ कि जैसे आपका बच्चा फॉर्मल स्कूल में 1 मंथ में जो सीखेगा वो हमारे पास वो 15 डेज में सीखेगा।
behind you. Nisar is there. I don't remember his name. Mr. Raj is there. Mr. Anil is there. Mr. Shakir is there. And of course, Mona Zaveri is there. So I would like to please recognize them and give them a hand for their The last part of today's program and जैसे कहें is to request the Chief Minister, because we are a stand up and do it. Okay. organization, kindly press the launch button for launching the second phase of 200 schools in the next 24 months. The first school has actually been already launched, so we are in essence celebrating that launch today and announcing the We can all stand. And this is not classical. शफीक है Thank you. आई गेस जफर साहब जितने आ सके इधर साथ ही I hope it works. आई होप सो Last time we It did will, this huh? was at Microsoft with the president. I saw it. Didn't work. चलिए जी शुड आई Yeah, let's start it. Thank you. the Honorable Chief Minister for his hosting today's event despite a very, very busy schedule. I know that he and the cabinet were in a 10-hour meeting yesterday, so to come here this morning for us is very greatly appreciated. I'd also like to thank all our guests. This concludes today's program. Thank you again, and inshallah we look forward to your contribution in the second phase of ADM. Shukriya. Thank you for that note. Gentlemen, if you can we set up a brief photograph, please?
कैसे हैं आप भाई? ठीक है आप? क्या हाल है? ठीक है। क्या पेश हो रहे हैं अफरीदी साहब? नहीं, मैं पेश हो रहा हूँ, उनकी भी आप। उनकी ज़रूरत तो नहीं थी कानूनी तौर पे इस चीज़ की? आज भी जाएंगे, देखते हैं, बुलाया इन्होंने, क्या कहते हैं। उन्हें ज़ाती तौर पे तलब किया था वैसे? साल्तन हो सकता है या मुकातन हो सकता है, दोनों चीज़ों अब पॉवर एंड पावर लॉ करना फिर तो पता कोई नहीं, लेकिन कानून में तो या मुकातन होता है या साल्तन होता है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। कैसे हैं आप भाई? ठीक है आप? क्या हाल है? ठीक है। क्या पेश हो रहे हैं अफरीदी साहब? नहीं, मैं पेश हो रहा हूँ, उनकी भी आप। उनकी ज़रूरत तो नहीं थी कानूनी तौर पे इस चीज़ की? आज भी जाएंगे, देखते हैं, बुलाया इन्होंने, क्या कहते हैं। उन्हें ज़ाती तौर पे तलब किया था वैसे? साल्तन हो सकता है या मुकातन हो सकता है, दोनों चीज़ों अब पॉवर एंड पावर लॉ करना फिर तो पता कोई नहीं, लेकिन कानून में तो या मुकातन होता है या साल्तन होता है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं।